Dear student and dear learners, this is a very useful formula how you can become a fluent speaker, because maximum people have the knowledge how to become fluent speaker, but they can't do it. Why? This is the reason and this is the fundamentals, because maximum people have knowledge, maximum people have the degree, but they don't have any skill set how you can perform front of the peoples. You need to understand how you can speak English, how you can live, how you can make the eye contact, how you can manage your body language. If you manage your body language, it means you become a fluent speaker. And all dear friends, all dear student, you need to understand the basic things how you can become a fluent speaker. Fluent speaker becoming is not a big task, but big task is how to do practice with someone. Suppose that you making your eye contact with your audience continuously, but your eyes actually show the low confidence, because you have the ultimate confidence and you have the ultimate power, but you are making a mistake while you speak in front of the peoples, because your mind has the problem. And when your mind thinking this is the problem, when your mind is thinking this is the problem, this is the biggest problem, because your mind is thinking your perception is actually become wrong while you speaking from the peoples. You need to understand the root cause of this problem. The root cause of this problem is the fear. This is the stage fear, and this is the valuable feedback for you also. You need to understand, you need to know about yourself, because you are the person who knows everything about you. And this is the major role play in your public speaking. If you know very well about yourself, about your business, because you admire yourself, you can do also, my dear friends, if you have time, you can learn the public speaking part. If you become a fluent speaker, if you become a public speaker, click now and join now this class. Yes, of course, I will tell you again, if you become a fluent speaker, you should join the class. You should know how you become a fluent speaker, because maximum people have the desire, maximum people want to speak in front of the peoples, but they don't have any idea how you can become a public speaker, how you can become a fluent speaker in front of the peoples. English is just a barrier. तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए उदास है, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। लैंग्वेज इज जस्ट ए लैंग्वेज, and this is not a biggest problem in your public speaking. This is just a part of your public speaking. लैंग्वेज एक पार्ट है, लेकिन अगर आप बिल्कुल जीरो से पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हैं तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए। आप फिजिकली सहारनपुर अब दूर नहीं है, आप सीख सकते हैं, आप दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग ऑलरेडी दिल्ली से सीख के आए हैं, बड़े बड़े स्पीकर से सीखा है। मेरा एक्सपीरियंस 12 ईयर का है और 3 साल से मैं पब्लिक स्पीकिंग भी सिखा रहा हूँ। कम्युनिकेशन स्किल्स पब्लिक स्पीकिंग के पार्ट पे हम कवर कर रहे हैं। अगर आप भी सीखना चाहते हैं, आप कंपनी में बड़े एम्प्लॉय हैं या फिर आपकी अपनी खुद की कंपनी है, आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप जल्दी से संपर्क करिए। 1-to-1 कोचिंग आप ले सकते हैं या फिर आप ग्रुप में भी कोचिंग ले सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। सी यू नेक्स्ट वीडियो।